Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our online class session of the course Molecular Biology BMT-3504 for the semester for 2025 offered in BS in Biomedical Engineering Technology. My name is Mohammed Sufian and I'm working in the Department of Biotechnology. Today we'll be discussing about the topic synthesis of DNA and it's also termed as DNA replication. In our last class we have initiated this topic but I thought कि हम इस topic को online भी एक बार अच्छे से go through कर लेते हैं so that इसकी recorded जो video recording है वो भी आप students के पास आ जाएगी and then for the exam point of view भी हम इसको future reference के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे. Okay. So up till now हमें ज्वाइन कर लिया है टोटल 17 स्टूडेंट्स ने बट काइंडली मेक श्योर कि आपके पास 42 स्टूडेंट्स हैं तो 75 से ज़्यादा परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना होगा अदरवाइज ये क्लास हमें दोबारा से रीस्केड्यूल भी करनी होगी तो इसलिए काइंडली आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनवाइट करें फॉर दिस क्लास रिमेनिंग के लिए फॉर द रीज़न हम उसमें कंसिडर कर लेंगे कि किस तरीके से उन बच्चों की क्लासेस को अटेंडेंस को मार्कअप किया जाए वो फिर मैंने तरीका आपको भेज दिया है ठीक है बाकी क्लास के दौरान कभी भी कोई टर्मिनेशन हुए इन वीडियो रिकॉर्डिंग या आपके पास स्ट्रीमिंग के हवाले से तो फिर टाइमली आप मुझे ग्रुप पे भी इंफॉर्म कर देना So, DNA synthesis, particularly, we'll be focusing more on the eukaryotes. The process of DNA synthesis occurs during the S phase of the cell cycle in eukaryotes. ठीक है सेल साइकिल में हमने पढ़ा G1 S G2 एंड M फेज होता है जिसमें से S फेज में replication occur होगी and is catalyzed by complex proteins that includes the enzyme DNA polymerase. Each strand of the parent DNA acts as a template for the synthesis of the complementary strand इसलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल का और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है DNA polymerase copies the template strand in the 3' to 5' direction and synthesizes the new strand in the 5' to 3' direction ठीक है जो रीडिंग है वो 3' to 5' होगी और जो सिंथेसिस है वो 5' to 3' होगी deoxyribonucleoside ट्राइफॉस्फेट serve as the precursors इनको हम substrates भी कह सकते हैं for the enzyme DNA polymerase cannot initiate the synthesis of the new strand. A short stretch of RNA serves as a primer. Primase एक enzyme है जो कि एक short stretch of RNA को attach करता है at the template DNA molecule and उसकी 3' जो hydroxyl group है उसकी उसको एक 3' hydroxyl group चाहिए DNA polymerase को to add the upcoming nucleotides. तो प्राइमर के 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जाके DNA polymerase अपना first nucleotide add करेगा. Other proteins and enzymes are required to unbind the parental strands and allow both strands to be copied simultaneously. Ensure errors that occur during the replications are corrected by the
enzymes associated with replication complex. ठीक है, during the replication अगर किसी किस्म का RNA के mismatch यानी कि अगर गलत न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा है तो उसको भी वो करेक्ट करता जाएगा. And eukaryotic cells DNA needs to be freed from their associated stores to allow replication to occur. Damage that occurs to DNA molecules can be corrected by repair mechanisms. ठीक है, इसको भी हम डिटेल से देखेंगे. ये सेल साइकिल की डायग्राम हमने क्लास में देखी थी. एंड इसमें आपको याद है कि हमने परसेंटेज वाइज भी नोट किया था कि इस परसेंटेज में द डीएनए कितनी प्लॉइडी स्टेट रहती है. प्लॉइडी इज द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो नॉर्मली इन आवर सोमैटिक सेल्स we have two a number of chromosomes which is 46. In our gamete cells वहाँ पे n number of chromosomes हैं which is 23. But there are conditions within the cell cycle जहाँ पे हमें 4n शो हो रहा होता है, जहाँ पे हमारे पास number of chromosomes 90 92 हो जाते हैं. ठीक है. uh, how many students have joined? 21. Okay, so let's start the resume to class. DNA molecules can recombine. A portion of their strand from one molecule can be exchanged for a portion of the strand from another molecule. Genes can be transposed, moved from one chromosomal site to another.
ठीक है, इस तरीके से ट्रांसपोजिशन भी हो सकती है। ये एक अगेन विद इन दी क्रोमोसोम एक फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास segments of the DNA है that are being moving from one region to another. ओके, फिर हमारे पास सेल साइकिल की बात करें जो फिगर 311 में है। सो G1 हमारे पास गैप फेज है। इसमें क्या है, सेल्स प्रिपेयर्स टू डुप्लीकेट। फिर सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है, रेप्लिकेशन, देन अगेन द सेकंड गैप इसमें प्रिपेयर्स टू डिवाइड। प्रिपरेशन में गैप का मतलब ये नहीं है कि सेल एक डोर्मेंट फेज में चला जाता है, बट ये कि अपने सेल तमाम अपने मेटाबॉलिक पाथवेज को परफॉर्म कर रहा होगा जिसमें वो तमाम प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सके जिसने इन नेक्स्ट आने वाले पाथवेज को परफॉर्म करना है। एंड द एम फेज सेल डिवीजन occurs, mitosis. Cell can reverse the cell cycle many times. Cells can also leave the cycle never to divide again, and they can enter a phase sometimes called the G0 or senescence, in which they remain for extended periods. Response to an appropriate stimulus, these cells uh, re-enter the cell cycle and divide again. ठीक है, यहाँ से G0 में चले जाएंगे और G0 से वापस फिर अगर कोई स्टिमुलस आता है फिर डिवाइडिंग स्टेज में एंटर हो जाते हैं। रेप्लिकेशन इज बायडायरेक्शनल एंड सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स अपने रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेंगे और सेमी कंजर्वेटिव जिसको हमने समझा है कि one parent strand will remain intact and the other strand will be synthesized. Origin of replication, और यहाँ से हमारे पास मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स की वजह से दो न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे। Bidirectional means that the replication begins at the site of origin and simultaneously moves out in both directions from this point. In prokaryotes have one override origin of replication, or eukaryotes have multiple sites of origin. कंजर्वेटिव देखिए, रेप्लिकेशन फॉर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, हेलिकेस क्या करता है, अनबाइंडिंग हेलिक्स, इसकी फिगर 313 को हम देखते हैं। पॉइसमेरेज जाइलेज है, डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स है 3 डीएनए पॉलीमरेज, पॉल 1 2 3। पॉल 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट वहाँ पे रोल होता है और वही तमाम चीज़ों को एग्जैक्टली गवर्न कर रहा होता है डीएनए रेप्लिकेशन को। जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेजेस की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जो टेबल 32 में है। The eukaryotic polymerases are named by the Greek letters, and the major ones are alpha, beta, gamma, sigma, and epsilon. Alpha is involved in generating primers for DNA replication. Beta is used exclusively for repair. जो sigma है acts as the lead polymerase in the lagging strand during replication, or epsilon is the lead polymerase on the leading strand of DNA, and जो gamma है ये क्या करते हैं, functions exclusively in mitochondria. So डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क किस तरफ मूव करेगी, ये हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए है। जो रीडिंग है वो ऑलवेज बी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो सिंथेसिस है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। वी हैव हेलिकेज जो अनवाइंड्स द डीएनए, वो पॉइसमेरेज
होगा जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिलीज करता जाएगा। देन वी हैव डीएनए पॉलीमरेज, इसके एक सब यूनिट एप्सिलॉन क्या कर रहा है, रीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पे कौन कौन से हैं, अल्फा है, सिग्मा है, जो कि ये रोल प्ले कर रहे होंगे। फिर ये ग्रीन में प्राइमेज है जो इनिशियली प्राइमर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स को अटैच करेगा। ये आपके पास इसको हम कलेक्टिवली रेप्लिसोम कहते हैं। सो टेबल 3.1 में हमारे पास वो तमाम प्रोटीन्स हैं जो रेप्लिसोम का पार्ट होती है, और ये उनके तमाम फंक्शंस हैं। पहले के सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, प्रिवेंट सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए फ्रॉम रिकम्बाइनिंग। ठीक है। डीएनए लैगेज क्या करेगा, joins by forming a phosphodiester bond to adjacent DNA strands that are bound in the same template। ठीक है, लाइगेशन परफॉर्म करेगा, और इसी एरे को हम देखेंगे आगे चल के एनालिसिस। Processivity of the DNA polymerase binds to many proteins present at the replication form। रेप्लिसोम में काफी सारी मशीनरीज के साथ ये पीसीएनए प्रोटीन को बाइंड करता है। फिर इंडिविजुअली पॉलीमरेजेस जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्फा बीटा गामा सिग्मा एप्सिलॉन है। कैपा डीएनए रिपेयर में जो लास्ट फोर टाइप्स है, कैपा, नीटा एंड सम अदर सिंबल, इसके डीएनए रिपेयर में ही ऑप्शंस हैं। सो फंक्शन जो है इम्पोर्टेंटली इन चार के, सॉरी इन फाइव के हैं, और बाकी ये जो फोर हैं ये तमाम के तमाम ये रिपेयर में इन्वॉल्व है। डीएनए पॉलीमरेज को एक प्राइमर शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए होता है, क्योंकि वो itself अपनी रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, तो उस प्राइमर के एंड पे 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां से डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और बाद में रेप्लिकेशन के एंड पे ये आरएनए स्ट्रेचेस रिमूव हो जाते हैं, एंड देन वहां पे रिमेनिंग डीएनए पॉलीमरेज वन या दूसरा यूकेरियोट्स में वो फिर अपने जो रिमेनिंग स्ट्रेचेस रहते हैं उनको भी फिल आउट कर लेता है। तो ये 3 प्राइम जो guanine है वो साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, और इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं। ये जो बाइंडिंग है इससे हमारे पास एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, ये रिलीज होता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पे जो शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स बनते हैं उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं।
Eukaryotic cells, about 200 nucleotides are added at the lagging strand in each round of synthesis. In prokaryotes 1000 to 2000 are added. So Okazaki fragments का जो size है यूकैरियोट्स में कम है 200 एंड प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा है. सो इनिशियली ये जो आरएनए प्राइमर्स है पैरेलल रिएक्शन में तो दोनों स्ट्रैंड्स पे तैयार के बाइंड करेंगे. ठीक है. इसके बाद क्या चीज़ हो रही है अनवाइंडिंग ऑफ पेरेंटल स्ट्रैंड्स. यहाँ पे होगा कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनते जाएंगे ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड जबकि लीडिंग में 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती जाएगी. ये जो गैप्स बाद में है इनको फिल आउट किया जाएगा और इस तरीके से लीडिंग पे भी और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों पे ही हमारे पास कंप्लीट बैचेस बचेंगे. जो लैगिंग स्ट्रैंड है उस पे एक इशू ये भी है कि लीडिंग में तो जस्ट एक इनिशियली हमें आरएनए प्राइमर स्ट्रेच चाहिए. लैगिंग में जो हमने साइज बताया ना यूकैरियोट्स की बात करें तो 200 बेस पेयर हर 200 बेस के बाद हमें एक आरएनए प्राइमर चाहिए. उसके बाद फिर 200 बेस पेयर लैगिंग स्ट्रैंड जिनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं. Fidelity of replication is very high with an overall error rate of 10 exponent minus 10. ये बनता है 0.0000000001 या हम इसको कहते हैं कि 1 error in अगर 9 zeros हो तो 1 billion 10 billion 10 billion बेसिस ऐड करने में कोई एक 1 billion to 10 billion हो जाएंगे. अच्छा नोटिफिकेशन आया है कि 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी. उसके बाद हम दोबारा से इस मीटिंग में को ज्वाइन करेंगे. तो लेट मी चेक कि हमारे पास स्टूडेंट्स कितने ज्वाइन हो चुके हैं. 25 is a very less number. सही है. सो इसमें एरर्स क्या चीज होती है. इंसर्शन ऑफ एन inappropriate molecule that occur during replication can be corrected by editing during
process. This proofreading function is performed by a 3' to 5' exonuclease activity associated with the polymerase complex. Post replication repair processes, mismatch repair also increases the fidelity of replication. ठीक है, म्यूटेशंस क्या होते हैं और किस तरीके के हैं रिपेयर मैकेनिज्म इसको हम पढ़ते हैं. लेट्स हैव 5 minute break एंड देन हम इस क्लास को वापस से ज्वाइन करेंगे विद अ न्यू मीटिंग लिंक. आई एम इंटरेस्टेड टू